I can't see them. You just see that there the messages here. अच्छा, message I can see, but I can't see their faces. हाँ? अच्छा, वो भी इंजाम शर्मा जी करो. They are actually attending in a mood. नहीं, वो सिस्टम ये आ गया है कि जैसे if you are talking, your entire class is visible I'll definitely request. on the screen. I'll definitely. हाँ, तो उनको ये कहो कि भाई ये क्योंकि जो है ना, then it is across the table almost. Okay, then. Okay. So this is RMT University? Whiteboard. No, I don't need. Well, distinct faculty members of RMT University, law faculty, and my dear students, including those who are attending this lecture. Now, I've been asked to talk about Indian Evidence Act, its main highlights. Before I begin, since you are preparing for your competitive examination, for judicial examination, you should understand that from the point of view of success in the judicial examination, preparation in Evidence Act is comparatively more important than other subjects of law, because questions in evidence appear in both the papers, whether it's criminal law or civil law. In both the papers shall question from evidence. So it carries comparatively more weight. Second reason is that Indian evidence law is highly technical. In fact, it's not everybody's cup of tea, even to teach it, because this is based on logic and rationality. This is one law which is definitely based entirely on rationality. Those a strong sense of logic, they will appreciate, understand, and retain. Those who lack that faculty, they will find it difficult. Now, why I say this? Because as a chairman of Faculty of Law, Punjab University, I had a problem. We would assemble in the staff meeting and then ask faculty members to choose their subjects. Indian evidence and nobody chose. Nobody opted for it. We tried retired high court judges. We tried eminent lawyers of the high court. Full-time faculty members, boys were not satisfied. So ultimately, it came to my lot. I said a subject who notice prepared to teach, let me take up that challenge. This is how I came to teach law of evidence. Otherwise, I specialize in legal theory and public intention law. These are my core areas. But I've been teaching law of evidence for more than 20 years now. Because of this problem, I had to accept this challenge. Now, let me begin by asking a simple question. Could you tell me your name? Darshanpreet Kaur. Jashan. Now she says she is Jashanpreet. And I'm a teacher addressing you. I have my doubts. And teachers always have doubts because they know in the classroom a lot of proxies are done. You are well aware. If 47 mark present, maybe 35 are actually present. That means some of them done proxy for others. So with this apprehension that she may not be Jashanpreet, I ask her, how do you prove that you are Jashanpreet and that someone has not proxied for you? How would you prove it? She says she will produce identity card. Identity card is a document. It could be any document. It could be a birth certificate. It could be high school certificate. It could be Aadhaar card. It could be identity card. It could be any other document. So she proves
her identity through what we call documentary evidence. These are documents, right? So one class of evidence is documentary evidence. And lot many documents are reduced in evidence in the code of law, more in civil cases rather than in criminal cases, that you very well know. Now, I also know and you understand that sometimes people fake the ID cards. So many students carry fake identity cards. They carry fake driving licenses, documents. Even Aadhaar cards are fake, many of them. So I once again, not satisfied with her answer, I once again ask her, well, I am still not convinced. So you still have to prove that you are Jashanpreet. How to do it? Documents, I don't believe them. Testimony of friends, you're right, yes. Then she can bring in her parents, her friends, her neighbors, acquaintances, classmates, who testify to the fact that indeed she is Jashanpreet. Now, this evidence, which is given by oral testimony, they are making a statement to the effect that she is Jashanpreet. We call this as oral evidence. Understand that? So there is another kind of evidence, we call it oral. We'll revert to this a bit later. Now today, we have a new act. Indian Evidence Act of 1872 has now been repealed. It replaced by a new act. This new act is known as Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023. It was assented by the President on 31st of December. That's why probably printed copies are not available. I tried in the market. I couldn't get a copy. Copy the bill I had, but not the act. So this has already become an act. And it shall come into operation once it is notified. You see, every act after President assents to it has to be gazetted. After gazette notification, it will be in operation. You get that? On comparison, there are no major changes. There are consequential changes. Consequential like with the advent of digital technology, the cyber technology, passing of IT Act 2000, lot many amendments had to be done in Indian Penal Code, जिसको रिप्लेस अभी कर दिया गया है. उसका है न्याय संहिता, न्याय संहिता शादी से नाम है. इवन CRPC उसको रिप्लेस कर दिया गया है. उसका भी कोई हिंदी में नाम है. आई डोंट रिकॉल उसको क्या कहेंगे. नागरिक सुरक्षा संहिता, तो वो भी रिप्लेस कर दिया गया है. So even before these new acts were enacted, conscious changes had been made in so many acts, including Indian Evidence Act, IPC, CRPC, CPC, Bankers Books Act, and lot many other acts. So those consequent amendments have been added to this new act also. Otherwise, this only rearranging the old provisions with some minor modification. For example, in the Act of 1872, there are lot many references to the colonial era. It still provides seal of the King of England, office of His Majesty King of England, Section 13 of the old Act, Indian Evidence Act, which is redundant now, obsolete, they could not repeal it. It will existed till this act is repealed. Now it says, if any territory has been ceded by the British Indian government to any native state, there is no British government now.
the notice date now. Evidence seeded and gazetted. It shall be conclusive proof, and no evidence the contrary could be given. इसकी तो जरूरत ही नहीं. It's not needed. Likewise, facts of which we shall take judicial notice. Reference made to colonial past. All that may be deleted. So there are minor changes. By and large, it is replication of the old acts. Why so? Because this act is a masterpiece of drafting. This was drafted by one important jurist, Stephen. It is Stephen's creation. And this man was such an expert, he knew of all judgments on law of evidence. All your illustrations, which are retained in the new act also, all those illustrations, each one is based on a decided case. You have hundreds of illustrations there. If not hundreds, dozens of illustrations there. Each illustration based on a decided case. See the quantum of knowledge that jurist had. He drafted it. It's very well drafted, although no draft could be perfect. No draft could be perfect. Like, for example, your constitution prepared by the Constitutional Assembly after such long debates. You have volumes of Constitutional Assembly debates. And all those constituency members, they were all important people, leading lawyers and others. Even then, this con amended how many times already? How many times Indian Constitution amended? 100 and if not 50, I'm not sure, but then it's not less than 130, 125, 130, whatever it is. Exact number I don't know. So in this last 75 years, because we celebrate Republic Day, 75th. In these 75 years, we had 130 amendments in the Indian Constitution. This means this is not a complete and satisfactory draft. You draft something, you read it after some time, you'll find some problems. You correct those mistakes, make it perfect. You read it again, then again you'll find something. Even a simple letter that writes, you can still make improvements every time. So this con amended 130 times approximately in these last 75 years. Whereas there are other constitutions like the US Constitution. Your constitution came in force in 1788. Long time back. One of the oldest. This doesn't have more than 25 amendments. हमारे 130 अभी हो चुके हैं. वहां पे दिन से नहीं हुए. So those are better drafted. Likewise, the Constitution of Germany, we call it Weimar Constitution. Who drafted it? This was drafted by one man. By one man, there are no Constitutional Assembly. See what type of genius he must have been. Iron Chancellor Bismarck. You must have heard of the name. Iron Chancellor Bismarck was an army colonel. फौज का आदमी था ये. He united Germany and followed the policy of blood and iron. इसको कहते हैं आयरन चांसलर. पटेल साहब को हम आयरन मैन कहते हैं. Why? Because he acted like Iron Chancellor Bismarck. It is after him that we call him Iron Man. Because he merged 540 or more United States into Indian Union. वो सिर्फ पटेल का काम था. 540 स्टेट्स को मर्ज किया हिंदुस्तान में. अदरवाइज कितने मुल्क यहाँ होते? That's why I call him Iron Man. Iron Man of India is Patel. Iron Chancellor Bismarck. Germany did not the constitution. So what this man did,
He called two scribes, stenos, दो बुला लिए, 5.5 घंटे की सिटिंग की, कॉफी पीता रहा, डिक्टेट कराता रहा। 5.5 घंटे में जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, एक आदमी ने, जो फौजी कर्नल था, एमिनेंट लॉयर नहीं था, जज नहीं था। सी द जीनियस ऑफ दैट मैन, एंड स्टिल that constitution is the constitution of modern Germany. So the point I'm making is that no draft could be complete. There is always scope for amendment and changes and modification. Otherwise, Indian University 72 is a very well drafted document. Even in the best of drafting, there could be some mistakes, and there have been, which have been hammered out in the new act. All examples of the same. So coming back to law of evidence. Now I already told you evidence is defined in your act, and this also has layman's definition connotation. It says your definition that evidence means and includes, number one, documents, which I told you just now. So documents adduced in evidence, which court allows to be adduced or requires to be adduced in evidence, that evidence known as a documentary evidence. That part clear? Or second part, all statements which witnesses are required to make or are allowed to make in the court, that is known as oral evidence. You understand that? We just talked about it. So your definition comes of two constituents, documentary evidence and oral evidence. Now it has two problems. One, it is not a conceptual definition. It doesn't say what evidence is. It says what evidence consists of. If I ask you to define a car, would you define in terms of what goes in the making of a car? It has steel, it has rubber, it has plastic, it has glass, it has wheels, it has steering. That does not make the car. These are the constants that go into the making of a car. But then car has a special character. That is motorized. This is how a car should be defined. A motorized vehicle, you may power it with electricity or with any other source of energy. Likewise, say if I ask you, define and explain what a gunpowder is. Now one could say, gunpowder consists of such and such chemicals. That does not make gunpowder. You pile up those chemicals, that doesn't make gunpowder. Those chemicals have to be mixed in a certain proportion. Are you getting me? Only then you make a gunpowder. And it has special nature. The nature is it is explosive. So you could explain gunpowder only in terms of its basic character, not in terms of what goes in the making of it. But what we are doing here, evidence means and includes documents and oral statements. ये तो definition ना हुई. Then likewise, there are many types of evidence which are left out, जो हैं इसमें शामिल ही नहीं. For example, admission or a confession. These are made by the party. This is evidence. Your act says there are provisions on evidence, admission, and confessions. But these are not witnesses. What is the definition saying? You have the act. You can look up. Statements made by witnesses. And the accused in a criminal court who makes a confession. A party that makes an admission. They are not witnesses.
Are you getting me? There are parties. So this is left out. Your definition incomplete. Likewise, sometimes in the court of law, weapon of offense is adduced in evidence. The victim was murdered with gunshot, with a dagger, with a sword. He is poisoned to death. So this poison, this dagger, this sword, this gun, they are adduced in the court of law. Your definition does not talk of it. Neither they are documents, nor they are oral statements. आप ये follow कर रहे हैं? But we treat them as evidence, and we call it material evidence. So material evidence has not been reflected in your definition evidence in your act. वो भी आपको यहां नहीं दिखाया गया है. That's not shown here. Are you getting me? Then there is yet another type of evidence that has come into existence on account of new technology being evolved, like cyber technology. That is electronic records. You call it digital evidence. Electronic evidence or digital evidence. Today, paper is being used less and less. Most of the activities are carried on paperless. E-commerce, government correspondence, filing of documents, replies. We are going digital. And a day would come when you won't have any paper. Now you have plastic money. अभी तो आपका डेबिट और एटीएम कार्ड, करेंसी नोट की जरूरत ही नहीं है. It's all cyber technology. And we are going ahead. You will have electronic money. आ गई है ना? इलेक्ट्रॉनिक करेंसी नोट्स आप मोबाइल में निकालिए और पे कर दीजिए electronically. So this evidence, which was not reflected in this, it has to be reflected. And in the old act, there was a lot of confusion. Like in the definition of documents, electronic record was not reflected. Definition देखिए आप act के अंदर जाएं. It says what is a document. Now I'll read it. Don't worry. Document means any matter described on any substance. यही है ना? In any of the ways, writing, sketching, drawing, engraving, or any other means. ये जो आपके टैटूइंग करते हैं ये भी राइटिंग है. यू कैन राइट थ्रू टैटूइंग. कुछ मैसेज लिखवाते हैं कुछ लोग जो हैं, कुछ जो हैं वो बहनें जो हैं भाई का नाम लिखवा लेती हैं, कुछ बॉयफ्रेंड नाम लिखवा लेती हैं. और अमेरिका और वेस्ट में तो इतने बेवकूफ हैं that sometimes their entire body is tattooed from toe to head. सारी बॉडी टैटूइंग is so dangerous, medically disastrous. It will lead to cancer. लेकिन वहां एक फैशन है. हमारे यहां भी यही दुकान देखी मैंने, अभी आ रहा था मैं. इंक, वो पता नहीं क्या लिखा हुआ है. हाँ? इंक जोन. पूरी दुकानें खुली हुई. हमारे बच्चे भी करते हैं आजकल. ठीक है ना? So all this is not reflected in our definition. That had to be included. So in this definition, electronic record is not treated as a document. Why so? What is that substance on which electronic message recorded? उसका आप देख नहीं सकते. मदरबोर्ड है, खाली है. आप आंख से देखिए, इज ए पीस ऑफ प्लास्टिक, कुछ भी नहीं है. What recorded there, उसको आप देख नहीं सकते.
उसको आप पढ़ नहीं सकते. In fact, computer is a machine that converts digital dots into words, and words are digitalized. आप जब ईमेल भेजते हैं तो आपका जो ईमेल रिकॉर्ड होती है वो वर्ड्स में नहीं होती, वो डिजिटल फॉर्म में ही होगी. आर यू गेटिंग मी? कमर जब टाइप करते हो तो वो जो कंप्यूटर रिकॉर्ड आपकी उसका है वो ईमेल आपकी वर्ड्स में नहीं होती. दैट इज ए डिजिटल फॉर्म. व्हेन इट रीच अदर कंप्यूटर्स, जिसको आपने डिस्पैच किया, भेजा है, कितने भी कंप्यूटर में आपने भेजा है, बल्क में ईमेल भेजी है आपने, then those receiving computers, they will convert your digital message into word message. वो फिर वर्ड में कर रहे हैं. So it was not a document because you can't see it, you can't touch it. Where document means any substance. Substance means something physical. दीवार है, लकड़ी है, कागज है, लेदर है, टिन है, मेटल शीट है, कोई तो होगा ना. You must have something. You may even use gas for writing. आपके जेट फ्लाई करते हैं रिपब्लिक डे पे तो कलर से झंडा बनाते हैं, वो भी राइटिंग है, वो भी ड्राइंग है. दैट्स ऑल्सो डॉक्यूमेंट. ये बात दूसरी है कि वो डॉक्यूमेंट 2 सेकंड में खत्म हो जाता है बिकॉज गैस डिसिपेट्स. बट वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ लाइफ ऑफ ए डॉक्यूमेंट हियर. वी आर टॉकिंग व्हाट इज डॉक्यूमेंट. एनीथिंग रिटन इन द स्काई with the help of some substance like colored gas, that also is a document. So we need some substance, and on this we describe something with the purpose that will use as a record or that is meant to be used as a record. आपका पर्पस क्या है? इसको रिकॉर्ड करने के लिए और या रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये इस पर्पस से आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं. सो डिजिटल रिकॉर्ड or electron record was not reflected in the definition given in the Act of 1872. Now in the new Act, this is included in the definition of a document. That electronic record is also a document and it's primary document. When you take out a sheet, the question was, is it primary evidence or secondary evidence? Primary क्या है? Original document. Secondary is copy of it, like photocopy. That classification we could not apply to electronic records. Primary is invisible. Secondary printout तो secondary हुआ ना. जो मैसेज कंप्यूटर में है ओरिजिनल तो वो है. आपने प्रिंट आउट लिया कागज पे तो ये तो प्राइमरी है नहीं, तो उसको क्या कहेंगे आप? इसको अटैच करवाओगे ना. इसी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट से दिस ए कंप्यूटर जनरेट डॉक्यूमेंट. इट डजंट रिक्वायर एनी सिग्नेचर्स. आपने देखा होगा ना वो डॉक्यूमेंट. इट डजंट रिक्वायर एनी सिग्नेचर्स. सो नाउ रिकॉग्नाइज दैट दिस इज प्राइमरी एविडेंस. एंड इन द न्यू एक्ट provision has been made for the same, included in the definition, and this is also known as documentary evidence. But the narrative evidence could be oral also. If you retain it, store it, or transmit it through any electronic gadget like a computer or mobile phone or something, it is a document. But then the point I'm making is electronic evidence may also be oral. How could it be oral? बताइए. You got the question. Email you have sent, documentary. Facebook message you have sent, WhatsApp message you have sent, all these are documentary. चाहे आप फोटो भेजिए चाहे मैसेज कुछ भेजिए. There could be cases where electronic evidence may also be oral. ये oral भी हो सकता है. Can you think of it?
No, voice message is you have sent the message. It could be voice message or word message. All are documents. आपने एक वीडियो भेज दिया, वीडियो है वो वॉइस मैसेज है, वो भी डॉक्यूमेंट है. यू कैन रेप्लिकेट इट. आपका टेलीविजन क्या है? टेलीविजन यही करता है. टेलीविजन ऑल्सो कन्वर्टर. टेलीविजन ये कन्वर्ट ही करता है. आफ्टर इट रिसीव्स मैसेज एंड you see that music and picture in digital form, and it converts that into picture and voice. फिर वो साउंड में कन्वर्ट कर देता है. One example this is when evidence is given by witness through video conferencing. Through video conferencing. आप समझ रहे हैं? अगर आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया है तो उसका डॉक्यूमेंट बन गया. बट व्हेन यू आर टेस्टिफाइंग इन द कोर्ट, जब आप अपने घर से आप विटनेस टेस्टिफाई कर रहे हैं कोर्ट के सामने, ये ओरल एविडेंस है. You are making a statement as a witness in the court electronically through video conferencing. आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी एविडेंस लिया जाता है. Are you getting the sense of it? But once recorded for future, if this statement needed in some other case, तो आप क्या करेंगे? इसकी कॉपी पेश करेंगे. The statement witness has made in their case, then it becomes a document. आप समझ गए? So electronic evidence could be documentary, it could also be oral, and all this has been added now in this new act with all clarifications, because earlier situation very confusing. Both that confusion is over. So this is another form of evidence which is included in the definition. Real evidence is still not reflected. Then there are a number of other kinds which are not the definition. In your act, you have so many presumptions. Shall presume, may presume, conclusive proof. ये सारे याद है ना? तो presumption है. ये क्या है? This also evidence. You may call it presumptive evidence. Court may presume, court shall presume. If court presumes, this goes against you unless you rebut it. अगर उस प्रेजम्पशन रिबट नहीं कर पाते तो फिर वो आपके अगेंस्ट एविडेंस है. फॉर एग्जाम्पल, a person is charged with theft of a motorbike. That motorbike is recovered from his house in a police raid. वो चोरी की मोटरसाइकिल घर पर पकड़ी गई, तो प्रेजम्पशन क्या होगी? या तो आप चोर हैं और यू आर कीपर ऑफ स्टोलन गुड्स, या तो आपने चोरी का सामान रखा हुआ है. यह प्रिजम्पशन है. यू कैन रिबट इट. नो, आई एम नाइदर थीफ nor keeper of stolen goods. You rebut it, then this presumption shall not be used against you. Otherwise, court can convict you on the basis of presumption if you are not able to rebut it. आप समझ रहे हैं? We call it presumptive evidence. ये भी आपकी डेफिनेशन में नहीं. एडमिशन कन्फेशंस भी नहीं, ये सारा नहीं है इसमें. So this definition is not very complete. Now, when I say you can rebut it, like he can say, well, this motorcycle was neither stolen by me, nor I am a received stolen property. In fact, I bought it by payment of market price after making regional inquiries. जिससे मैंने खरीदी है, मैंने उसको पूरे पैसे दिए हैं, मैंने कम पैसे नहीं दिए. ये भी आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि चोरी का सामान सस्ता बिकता है, कोई पूरे पैसे नहीं देता. I paid by check, I paid the full price, and I am regional inquiries. तो मुझे लोगों ने बताया, हाँ भाई ये इसी की मोटरसाइकिल है, मैंने कागज भी चेक किए,
इसके पास रजिस्ट्रेशन बुक भी थी जिसमें ये एंट्री मोटरसाइकिल हुई है इसकी। आप फॉलो कर रहे हैं? इसका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी इसके पास है। सो आई एम ए बोनाफाइड बायर। दिस प्रिजम्पशन स्टैंड्स रिबटेड। दिस कैनॉट बी यूज अगेंस्ट यू। आप समझ रहे हैं? अदरवाइज प्रिजम्पशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स एन एविडेंस एंड समटाइम्स conclusive proof. It is conclusive evidence where in rebut is not allowed. जहां पर rebuttal भी allowed नहीं है. For example, I think under section 82 of Indian Penal Code, अब तो रिपील हो गया है वो जो है, a child up to 7 years of age is immune from criminal liability. ये तो आपको पता होगा अच्छी तरह. Now a child of 6 years, he picks up revolver of his father and shoots a person whom he doesn't like. इसको ये चांटा मार दिया था किसी अंकल ने, इस रिवॉल्वर गोली मार दी. He is immune. You can't charge him. Now prosecution says this child is 6 years chronological age, but the fact is he is a precocious child. Precocious children वो होते हैं जो अपनी एज में बहुत जल्दी ग्रो करते हैं. There have been wizards. There have been kids. A 10-year-old child, he completes the MBBS. There are cases where he completes BE, Bachelor of Engineering. There are precocious children. So he says, prosecutor says, I can prove that he's mentally 20 years. He can form intention. He had grudge against his uncle who had slapped him. He was looking for a revenge. He found the gun. He must have seen his father operating it. इसने गोली चला दी और मार दिया. He's a murderer. Now what would court say here? Court said no. This presumption is conclusive. It can't be rebutted. No one shall be allowed to rebut this presumption. If you prove that this child is 6-year-old or up to 7-year-old. So there is another kind of evidence which we call presumptive. Yet another, circumstantial evidence. There is no eyewitness of the crime, but there are witnesses regarding circumstances. Like for example, X से चार मर्डर हुआ है, किसी ने नहीं देखा, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है. But there are circumstantial evidence, like 5 witnesses appear, A, B, C, and D. A says X had a grudge, a family feud against Y. इनकी जाति दुश्मनी थी फैमिली की. ये जट फैमिली है, इनका झगड़ा जन रहा है, भूलते नहीं है. फैमिली फ्यूड है, ये मारते जरूर हैं. बिश्नोई तो इतने खतरनाक थे that one family married their daughter in another family. ये recorded case है. Son-in-law invited. बुला लिया उसको जी, जिस घर में ब्याह है उसने बुला लिया जी. Son-in-law, and they butchered him, slaughtered him. और कहा कि तुमने क्या किया है? कहना साहब 3 पीढ़ी पहले इनके खानदान ने हमारे खानदानी को मारा था, हमने उसका बदला इस तरह लिया. 3 पीढ़ी के बाद लोग भूल गए थे सब कुछ. ऐसे रिकॉर्डेड केस भी हैं. फैमिली फ्यूड, वो जट में और झोटे में थोड़ा ही फर्क होता है, वो भूलता नहीं है वो. ये सारी देखिए ऑनर किलिंग हरियाणा में, पंजाब में, इवन पाकिस्तान में, वही जट है.
सारे पंजाब में जट मुस्लिम है सारे होते, वहां भी ऑनर किलिंग्स हैं. So there no eyewitness. A says X and Y family feud for 2 generations. So X was on the lookout for opportunity to kill Y. ये तलाश में था कि मारना जरूर है. B another witness. He says he came to me and told me, you have a gun, you know how to operate a gun, could you help me in buying a gun? क्या मुझे एक अच्छी सी बंदूक खरीदवा सकते हो जिसमें निशाना बहुत अच्छा लगे और दूर से भी लग जाए? मैंने इसको गन खरीदवाई. ये भी करता. एंड द फैक्ट इज दैट वाई वाज शॉट विद द गन. गन भी रिकवर हो गई. सो दिस ऑल्सो सर, डायरेक्ट नहीं देखा किसी ने मारते हुए, लेकिन उसने ये कहा कि मेरे पास ये गन खरीदवाने के लिए मेरी मदद ली इसने. शॉपकीपर ने कहा, यस दिस गन आई सोल्ड हिम, ये मेरी दुकान की गन है, मैंने इसको बेची थी, मेरे पास खरीद के गया है. ये भी है. देन शी सेज I saw X number of times having target practice in the forest. जंगल में रात को शाम को टारगेट प्रैक्टिस करता, तरबूज टांगता था और तरबूज में गोली मारता था निशानेबाजी सीखने के लिए. यह भी सर्कमस्टेंशियल है कि निशानेबाजी किस लिए सीख रहा था. इज रेलेवेंट एज ए सर्कमस्टेंस. Now then D comes. D says, I had gone for a walk and I saw X. He was lying in wait with his gun in his field. एक जगह गन लिए बैठा हुआ था. ये भी रेलेवेंट है. Because X was found shot nearby that place. X की बॉडी वहीं से रिकवरी जहां पे वो कहता है बैठा हुआ था गन लिए हुए. That means he saw him sitting in ambush. ये भी रेलेवेंट है. Then the other person D or E, any number of person, he says I had gone late in the night to look after whether animals have entered my fields or not. तो रात को प्रोटेक्ट करना पड़ता है ना, गाय घुस जाती है, नील गाय खासतौर से, सुअर है, नील गाय है, पहले गीदड़ भी हुआ करते थे, जैकाल्स. They used to destroy a crop. So I had gone for a night watch and I saw X dragging some bag and concealing this. मैंने बॉडी वॉडी नहीं देखी किसी की, लेकिन एक बोरी को खींचता हुआ जा रहा था. मैं डर गया, पता नहीं क्या कर रहा है. I ran away. This also, and body of Y was recovered from a gunny bag. ये भी circumstantial evidence. Now why circumstantial? Because if you put all these facts together, you can draw an inference कि Y का कत्ल X ने ही किया है. Are you getting me? Incontrovertible, undoubtful inference, conclusion from these circumstances. So this another kind of evidence will not reflect in your any number of times. So in other words, the definition of evidence given in the old act and given in the new act, this is still not conceptual and is still not complete. ये दोनों एक्ट में डेफिनेशन पूरी नहीं है. बिकॉज यार ये नहीं बताती एविडेंस क्या है, ये कहते हैं एविडेंस में क्या क्या शामिल है. एग्जाम्पल आई हैव गिवन. सो इफ यू आर आस्क्ड अटेम्प्ट योर ओन डेफिनेशन, तो आप क्या डेफिनेशन करेंगे कंसेप्चुअल? यू में से evidence means and includes all those facts which tend to prove the existence or non-existence of another fact.
excluding mere legal arguments. Legal argument evidence नहीं होते. So it means all those means that you employ to prove the existence or non-existence of fact is evidence. ये means कितने हैं? ये कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है. This definite comprehension includes all. For example, when judge puts a question to the accused, जज एक सवाल पूछता है, एक्यूज जवाब देता है, तो जज उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डिमेनियर, वो कॉन्फिडेंस है, डरा हुआ है, नर्वस है, मिसलीड कर रहा है, ये इन्फ्लुएंस करेगा नहीं कोर्ट. वो इंप्रेशन, वो स्टडी कोर्ट की, वो भी एविडेंस है. वो रिलाई ऑन दिस. दैट इज व्हाई जज कैन आस्क एनी क्वेश्चन अंडर एविडेंस एक्ट ऑफ एनी पार्टी ऑफ एनी विटनेस. जज को पूरी फ्रीडम है. आप ये नहीं कहेंगे सवाल रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, आपको नो, सवाल रेलेवेंट है, ये आपका सब वो नहीं है. एनी क्वेश्चन इज पुट टू एनीबॉडी. लाइकवाइज लेट मी गिव एन एग्जांपल कि शाम को पुलिस नाका लगा हुआ है, एक कार वाले को रोक लिया कि भाई मैं ये देखना है तुम दारू तो नहीं पी के चला रहे, तो ये एल्कोमीटर में फूंक मारो इसमें. वो कहता मैं तो नहीं फूंक मारता, मेरा राइट है, मैं नहीं मारूंगा. यू कांट कंपेल मी बिकॉज अंडर आर्टिकल 20 आई हैव अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इनहिबिशन. आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते. उसने कहा ठीक है भाई, कंपेल तो नहीं कर सकते. मीनवाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट कम्स इन द राउंड. ट्रैफिक मजिस्ट्रेट से होते हैं, रेलवे स्टेशन में होते हैं. तो उसे कहता है भाई ये बताओ कि तुम्हें यह कहा गया है कि हमें देखना है तुम ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे थे, तो तुम एल्कोमीटर में ब्लो करो. वो कहता नहीं करता. ठीक है, मजिस्ट्रेट कैन नॉट कंपेल हिम, बट मजिस्ट्रेट कैन ड्रॉ his own inference. He is not blowing in the alcometer because he is drunk. ये इन्फ्रेंस कोर्ट निकाल सकती है. आप समझ गए, ये भी एविडेंस है. So there are many types which are included in this definition, which is conceptual. Any means, any facts, any modes by which you prove or disprove is evidence. So this is what we mean by evidence. Now coming to oral and documentary. Documentary I told you about, definition of document. I'd ask you one thing here. Supposing somebody writes an obscene word with his finger in the air. He makes an obscene gesture in the air. Is it a document? Any other answer? क्यों है? Why? You say it is a document? You answer right. It is a document. क्यों? Because it has not been recorded. उसने ऑप्शन gesture लिखा और वो खत्म हो गया. But you could have taken a photograph. You could have caught on the reel. आप उसको रील में कैप्चर कर सकते थे, और रील तो डॉक्यूमेंट है. जैसे साउंड ट्रैक है, फोटो है, फोटो फिल्म है, आपकी सारी मूवी उस पर होती है. पहले तो रील ही चलती थी ना. जो सिनेमा में वो दिखाते हैं वो सारे वो रील से ही करते हैं. वो उनका वो टेलीविजन नहीं शो करते आपको. जो दे आर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर में रील फीड करते हैं वो, और उसी आप मूवी दिखाते हैं. यू कॉल इट मूवी प्रोजेक्टर. दैट मूवी प्रोजेक्टर इसी प्रोजेक्ट्स दैट पिक्चर ऑन द स्क्रीन. तो आप कहते हैं भाई मुझे पिक्चर देखनी है सिनेमा हॉल में, क्योंकि वहां 70 mm का पर्दा है, बड़ा है, टेलीविजन तो छोटा है. So some people like to see it on the larger screen.
So this also is, somebody writes something obscene in a sand near sea coast. वो वेव आई और उसको मिट गया. Is a document? It is. हम ये नहीं कहते डॉक्यूमेंट किन लिए रहेगा. इंपॉर्टेंट ये नहीं है. इंपॉर्टेंट है समथिंग रिकॉर्डेड ऑन सम सब्सटेंस is a document. I gave the example of Air Force jets making Indian flag in the sky with the help of colored glasses. वो momentary है, लेकिन वो भी document है. You can capture it on a photograph. Your answer is right. So this is how we describe, explain, understand what document is. What do you mean by oral? Something is spoken. This is layman's definition. That any word is spoken, any statement made orally is oral evidence. But then in law, this word has a very wide connotation. Very wide connotation. For example, if a statement is made by word of mouth, this is oral. If it is made by a gesture, this is also oral. Gesture document when somebody writes something obscene in the air and you document it. They documentary. यहाँ पे क्या है? You are making a statement through gesture. For example, there was a case, R versus Abdullah. आपने पढ़ा भी होगा, लिख लीजिए. R versus Abdullah. 1885. Allahabad High Court. बहुत पुराना केस. What happened was, there was a woman, Dulari. Her throat was slit. So sound box was damaged. She could not speak. But she was still conscious. People assembled around. And they asked him, is it A who has cut your throat? She did not respond. Is it B? Nothing. C? Nothing. When Abdullah's name came, she nodded her head. उसने अपना सर थोड़ा झुकाया. ये gesture है. आप समझ गए? So this gesture made, अगर इसको आपने वीडियो कर लिया, फोटोग्राफ कर लिया, तो वो तो हो गया डॉक्यूमेंट. Otherwise, gesture is a statement, not in words. Is a statement by gesture. And court held, अलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये oral evidence है. This is oral evidence. आप समझ गए? Now, this has been included in the section. पुराने section में 119. आप निकालिए 119. 119 में just have a look at section 119. अब देखिए, पढ़िए इसको. Just read it aloud. Who is unable to speak may give his evidence in any other manner Yes. in which he can make it intelligible. Yes. So you may draw it, you may make a gesture, you may not write, you may write it, you may not speak. All this oral, जो आप लिखते हैं वो भी oral है, जो gesture है वो भी oral है, जो draw करते हैं वो भी oral है, लेकिन फ्यूचर के लिए ये डॉक्यूमेंट्री है. That is why videography is mandatory under section 19. आप देखिए इसमें. चलिए वीडियोग्राफ्ट. मिल गया? 119. 119. Videograph for the future record. So if though that statement is needed or ever needed in future case, then you can produce that video, then document. So word oral has a very wider meaning. It's not limited to, because there are witnesses who are dumb,
who are deaf, who are blind, who are hard of hearing. कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता, तो होता है ना, तो उनसे कैसे करें? दे आर कॉमन विटनेसेस. द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज if they can make a statement any other way, they are still competent witnesses. We apply only two tests. Every person is a competent witness who satisfy two conditions. One, he can understand the question. Second, he can give a rational answer to that question. In any of the ways, including spoken statements, gestures, writing, drawing, in whatever other way. और ये सारा एविडेंस ओरल ही होगा व्हेन गिवन, लेटर ऑन डॉक्यूमेंट्री. आप ये समझ गए? तो ये सारे, दिस इज व्हाट आई मीन बाय ओरल. वर्ड ओरल कैरीज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग. क्या आप समझ गए? एनी क्वेश्चन ऑन दैट? सो एविडेंस कुड बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स. नाउ आई बिगिन विद द क्वेश्चन पुट टू हर. And I asked her, prove your identity. She proved in two ways, documented and oral. Okay? Now that she has an identity card is a fact. And what was proven to her? Identity of, आप नाम मैं भूल गया, Jashan. Whether she Jashan or not, this also a fact. She is a fact, she is not is also a fact. Fact दोनों हो सकते हैं ना, या तो जशन है या जशन नहीं है, दोनों इफेक्ट है. और उसको प्रूव कैसे कर रहे हैं आप? You are proving it by another fact, identity card. So in brief, please mark this sentence. All evidence consists of facts, and all evidence is about facts. इस सेंटेंस समझ लीजिए. All evidence consists of facts, or it is about some other facts. So fact is the fulcrum. The entire law of evidence revolves around the word facts. जो आप एविडेंस देते हैं वो भी फैक्ट है, जिसके बारे में दिया तो वो भी फैक्ट है. आप समझ गए सेंटेंस का? Consists of and about. That is why Evidence Act says evidence could be given of either relevant facts or facts in issue and of no other. तो एविडेंस भी फैक्ट ही है. Now the question arises, and we shall complete with this. What is a fact? Fact is defined in your Act. This definition based on Bentham's classification of facts. Bentham का नाम सुना होगा आपने? उसने फैक्ट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया. एक था फिजिकल फैक्ट्स, सेकंड साइकोलॉजिकल फैक्ट्स. राइट? फॉर एग्जांपल, दिस podium, this table, this chair, this room, this wall, these are physical facts. अच्छी तरह समझते, because they are having material corpus. They are physical, they are objective. You can see them, they are amenable to sense perception. You can perceive them by any of our five senses. Even a music is a fact. और ये physical है, because you hear it. You smell something. Fragrance ये भी physical है. अगर fragrance नहीं होगी तो आप fragrance सूंघ नहीं सकते. Are you getting me? Deodorant लगाते हो, इत्र लगाते हो, सेंट लगाते हो, तो ये भी फैक्ट है. फैक्ट है ना, सेंट तो बॉटल में आएगा ना. अगर बॉटल खाली हो तो सेंट नहीं होगा, तो ये भी फैक्ट है. ये फिजिकल फैक्ट है सारे. Amenable sense perception, that you can feel, touch, weigh, taste, smell, hear.
All these are facts. Other facts are psychological facts, mental facts. So your definition says, please mark my words, fact means, ये definition ले रहा हूं आपके एक्ट में दी हुई. Fact means number one, anything, any state of things, or any relation between things. These are all physical facts. So facts, anything is a fact, any relation is a fact, any state. ये आदमी यंग है, ये बूढ़ा है, ये क्या है? State of anything. ये state ही है ना. One is old, one is weak. This girl is beautiful, that girl is ugly. ये भी फैक्ट है कि नहीं है? मानते हो उसको? State of things, relation of things. This Iranian girl is more beautiful than Indian girl. Relative. दुनिया में हर चीज रिलेटिव है. If a girl from Africa comes to India, तो हम तो बड़े बदतमीज लोग हैं, कमेंट करने से बाज नहीं आते. That we are very ill-mannered people. In any case, let me remind you, or tell you, that Indians are the most abusive people on earth. आज की तारीख में सबसे ज्यादा गलौज करता है हिंदुस्तानी. पहले स्पेनिश करते थे. इसमें notorious for using nasty abuses. आजकल हम करते हैं. I find children, मैं word use नहीं कर सकता, when they greet each other, खोते किथे सी, किथों आया काले चोर, I am being mild. मैंने कहा भाई ये क्या जबान है ये? How do you greet your friend? कहना था साडा प्यार बड़ा. मतलब प्यार भी गाली में रेफर होता है. आप समझे? So things are relative. You can't understand anything unless you relate one with the other. इसके बगैर किसी को आप समझ नहीं सकते. For example, you say this man is tall. भाई क्या मतलब है? He is tall because others are short. अगर दुनिया में सब लोग एक ही साइज के होते, क्या आपको टॉल का कंसेप्ट होता? नहीं होता ना. ब्यूटी है, स्किन वाइट है, डार्क है, छोटा है, बड़ा है, बीमार है, हेल्दी है, यंग है, बूढ़ा है, ऑल दी आर रिलेटेड. इसको समझ नहीं सकते आपको. ये बिगर है. अब एक लाइन में खींचता हूं, आई आस्क यू, इज इट लॉन्ग और इज इट शॉर्ट? तो आपका कोई आंसर नहीं. अनलेस आई ड्रॉ एट द पैरेलल लाइन. नाउ आई आस्क यू, नाउ यू कंपेयर एंड से कि साहब ये जो लाइन आपने पहले ड्रॉ की थी ये छोटी है, जो बाद में ड्रॉ की है बड़ी है, या पहले वाली बड़ी है बाद वाली छोटी है. यही होता है ना. सो रिलेशन बिटवीन थिंग्स, स्टेट ऑफ थिंग्स और एनीथिंग, दीज ऑल फिजिकल फैक्ट्स. आप ये समझ गए? मेंटल इज नॉट फिजिकल, क्योंकि ये हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते. लाइक यू से दिस मैन इज अ मार्क्सिस्ट, ये भी फैक्ट है. येचुरी इज अ कम्युनिस्ट लीडर. दिस मैन इज जनसंघी, ये बीजेपी का आदमी है. ये राम भक्त है ना. ये सारे फैक्ट्स हैं. ये मेंटल फैक्ट्स, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स योर मेंटल स्टेट, कि आपके अंदर राम की भक्ति है, विच यू शो एंड एग्जिबिट. तभी तो पता चलता है कि राम भक्त हैं. हमें क्या मालूम? भाई आप पूजा करते हैं, राम राम का कपड़ा पहनते हैं, धुआं बत्ती करते हैं, तो कहते हैं राम भक्त है. मेंटल है ना. बिलीफ, आइडिया, बिलीफ इज ए मेंटल फैक्ट. इंटेंशन, मोटिव,
मैं दिखा नहीं सकता आपको ये मोटिव है, ये इंटेंशन है। इज मेंटल फैक्ट। X is child murder. Why? One fact you have to prove is that X had the intention to kill B. Why? तो intention जेब से निकालते हो नहीं? How do you prove it? You prove it by other facts. But intention is mental facts. आप ये समझ गए? Goodwill, reputation, bad repute, ये सारे जो है ना, ये सारे honesty, dishonesty, fraudulent character, bad character, good character, ये क्या है? ये सारे mental fact हैं. ये मार्क्सिस्ट है, ये कांग्रेसी है, ये नेता है, ये जो भी है, ये सारे जो हैं, तो ये मेंटल फैक्ट्स, दे आर नॉट फिजिकल. नाउ लेट मी आस्क यू एंड देन कंक्लूड. इज गॉड ए फैक्ट? वंस अगेन थिंक. ये प्रॉब्लम दी है आपको जी. दैट गॉड एग्जिस्ट, इज इट ए फैक्ट और इज इट नॉट? नो, नो. Nothing can be a fact which can't be proved one way or the other. जिस चीज को आप ना प्रूव कर सकते हैं ना डिस्प्रूव कर सकते हैं, वो फैक्ट नहीं हो सकता. एक कहेगा खुदा है, एक कहेगा खुदा नहीं है. एक कहेगा खुदा एक है, एक का खुदा अनेक है. एक ओंकार. हिंदुइज्म में कितने? 33 करोड़, 33 करोड़ देवी देवता हैं. दैट दे बिलीव इन गॉड. एक्स बिलीव्स इन गॉड इज अ फैक्ट. ये भगवान में यकीन करता है, ये फैक्ट है. तो फैक्ट है. जो पूजा करता है, भगवान यकीन करता है, बात करता है, दैट इज एथीस्ट. ये भगवान में यकीन नहीं करता, ही इज अ नॉन बिलीवर, इज ऑल्सो ए फैक्ट. आप समझ रहे हैं? ये आप प्रूव कर सकते हैं बाय हिज कंडक्ट, by external acts. You can prove intention, motive, greed, fraud, cheating, misrepresentation. आप सब कुछ प्रूव कर सकते हैं. But God, whether God is or is not a fact. ये फैक्ट नहीं है. आप कहेंगे भूत, is ghost a fact? No. ये भी नहीं कह सकते कि वो घोस्ट नहीं है, ये भी फैक्ट नहीं है. Because you can't prove it one way or the other. कुछ लोग ऐसे हैं इनको दिन में भूत दिखते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं रात में नहीं दिखते. वो कहते हैं कहां है भूत, दिखाओ. आप समझ रहे हैं? लेकिन ये फैक्ट है कि एक्स जो है ये भूत प्रेत आत्मा में यकीन करता है. ये फैक्ट है. सो दिस इज फैक्ट. हाउ डिफाइन फैक्ट? डिफाइंड in terms of physical and mental facts. Examples are given there. And all evidence, let me repeat, is about facts. And all evidence consists of facts. Fact ही असली चीज है. This is what evidence is like. So I think we will stop here. If you have any question to ask, or question may be any question and evidence, ये जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने आपको बताया उसी के बारे में पूछें. If you have any question in mind regarding evidence from anywhere, you are free to ask it. So dear students and faculty members, I concluded here, unless you have any question to ask. Yes, you may ask your question, write your question if you want to ask one. So no question is forthcoming. है कोई सवाल? नहीं, कोई नहीं है. Okay then, thank you very much. God bless you all. Thank you. कुछ भी करें, दुनिया के सबसे बड़े झूठ
और आप जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या जाइए वहां बैठा रहो, वो कहेगा भी अटैच कर दी साइन करवाओ, जिसका कहना था वो बनाया अटैच कर देता हूँ, सिग्नेचर कर दिया इसका आपका जो हाँ साइन करो, हर चीज एफिडेविट चाहिए और 90 पर एफिडेविट जीतो, वन साइडेड है, बट अंडर amended provision under CPC affidavit can be accepted by the courts in evidence. No exception है, under your act is not नहीं applicable, लेकिन उसमें भी if the other two want to cross examine the deponent, court has to give a right of cross examination. आप समझ रहे हैं? अगर दूसरा ऑब्जेक्ट करती है, you cannot accept this evidence by affidavit, I want to cross examine that deponent, then court has to give a chance. Otherwise, court may accept the court as well. So on the race, it is one-sided, and we don't believe it because there is no cross examination. That's why it's not evidence. An example दे दूं. There are plot allotments, multiple. अगर केस चला हाई कोर्ट, एक एक आदमी के चार चार प्लॉट्स और सबने फिर दिए देना होता है। मेरे पास चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में कोई मकान दुकान नहीं है। Such affidavits by High Court will be placed on the file. मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है जिनके एफिडेविट आज भी फाइल लगे एफिडेविट दिया, बड़ी बड़ी कोर्ट सेक्शन में और वहां डिस्क्रिप्शन कोर्ट आगे प्रॉपर्टी एक जज साहब ने तो 6 प्रॉपर्टी बेटे के नाम, बेटी के नाम, सन इन लॉ के नाम, अपने नाम, वाइफ के नाम, क्योंकि आपको ये कहना पड़ता है कि मेरे और मेरे वाइफ या मेरे डिपेंडेंट के ऊपर कोई इंडिपेंडेंट में बात चाहिए, हर चीज एफिडेविट चाहिए और हर एफिडेविट में लोग दैट इज व्हाई आप एनी अदर क्वेश्चन एफिडेविट्स अगर मतलब एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि दे आर नॉट रिलायबल, या है ना, तो सर no they are not evidence, दे आर नॉट evidence does not provide, they are not evidence. सिविल सीपीसी में है सर, सीपीसी में एक्सेप्शन है, लेकिन मैंने बता दिया ना राइडर, अगर दूसरी पार्टी कहती है मैं इस डिपोनेंट को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता हूं तो उसका राइट है, ये कोर्ट नहीं एक्सेप्ट कर सकती, कोर्ट शैल हैव टू गिव राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। तो सर सीपीसी में भी जनरल रूल में एविडेंस नहीं है, एक्सेप्शन में है। मैं बता ना एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसलिए कि टाइम बचाने के लिए कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट करती है तो कोर्ट नहीं कर पाएगी, या कोर्ट करेगी तो उसको चांस दो क्रॉस एग्जामिनेशन, बिकॉज क्रॉस एग्जामिनेशन इज ए राइट ऑफ एवरी पार्टी whenever any evidence whether document or oral is given by the person, उसका राइट बनता है, that's why it's not. और कुछ सवाल है? So thank you very much. All the best for you. You have completed your law already? यस सर, I'm good. ये कहाँ से किया आपने? सर पंजाब यूनिवर्सिटी क्या? अच्छा आपने कहा सर अभी यूनिवर्सिटी नोएडा या completed? फाइनल ईयर। अच्छा जो फाइनल अब लॉ पढ़ रहे हैं आप अच्छा शिमला, आपका भी शिमला? सर पंजाब यूनिवर्सिटी। अच्छा 3 year or 5 year? 5 years. Very good. Okay. All the best. God bless you. और तैयारी करो क्योंकि मैं बैठ जाऊँ, रीजन ये है एलिटिकल बच्चों तुम्हें ना तो पढ़ाया गया और ना तुम पढ़े। आज का जो माहौल है 85% ग्रेजुएट जो हैं वो डिग्री डिजर्व नहीं करता, लेकिन डिग्री मिल रही है। आप तो प्राइवेट और में फीस दो डिग्री दो, तो ये भी हो गया, सिर्फ फीस दे दो उनको, कंप्लीट एवरीथिंग नहीं करते। पहले साउथ से ले जाते थे,
आप लोग जो कोचिंग के लिए माँ बाप का इतना पैसा खर्च करते हो, लाख लाख 1.5 लाख रेफरेंस, क्योंकि आप पढ़े नहीं। अगर आप पढ़े होते तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो टाइम चला गया है, तो आपको एडिशनल कोचिंग लेनी ही है। देखिए, बगैर एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। देयर नो फ्री लंच, यू हैव टू वर्क हार्ड. You should have worked there in those 4-5 years or 3 years, or you करना तो पड़ेगा. So now, but I assure you that 1 year preparation, dedicated preparation, will ensure success. 1 साल की मेहनत है आपकी, लेकिन उसमें you should not flinch back with dedication कि मुझे पास होना ही होना. Thank you so much. Thank you.